Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 4, Religious Festivals in Pakistan, and today I will deliver its second lecture. So my dear students, let's quickly start with the recap, what we did in the previous lecture. For that, you have to answer a few questions. तो आपको याद है हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? चले जल्दी से आपने गौर से क्वेश्चंस को सुनना है and you can also pause the video and then you can answer the questions. Okay, so what is a festival? What is a festival? Very good. Why are festivals celebrated? Because they connect the people together, and we also connect to our roots and our background. So that is why we celebrate sorry. So my dear students, because we are studying about the religious festivals of Muslims, and in the previous lecture we studied about Eid-ul-Fitr. तो आप सबको पता है कि आप ईद उल फितर कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं. हम ईद उल फितर रमज़ान के बाद मनाते हैं 1 शवाल को, और इस दिन ईदी भी मिलती है, ईद की नमाज अदा की जाती है. एंड वी वेयर न्यू क्लोथ्स, girls wear bangles and decorate their hands with henna, and people pay fitrana before Eid namaz. So these are the festivities of Eid al-Fitr. So today we will discuss and study about Eid-ul-Azha. This is another religious festival of Muslims, जिसको आप लोग बड़ी ईद के नाम से या कुर्बानी वाली ईद के नाम से भी जानते हैं. ऐसा ही है. कौन कौन अपने बाबा के साथ जो है, या अंकल के साथ, या चाचू के साथ बकरा खरीदने जाता है या गाय खरीदने जाता है? हाथ खड़ा करें जल्दी से. और कितना ज्यादा मजा आता है. वहां डिफरेंट तरह के आपको जानवर देखने को मिलते हैं, बकरे, गाय, ऊंट, और बहुत बड़ी बड़ी बैल होती हैं वहां. एंड वी रियली एंजॉय लुकिंग एट दीज एनिमल्स. और इस ईद को वी से इट ईद उल अजहा. So my dear students, let's quickly look at today's student learning outcome. Today all the students will be able to understand why Muslims celebrate Eid-ul-Azha. Describe how people celebrate Eid-ul-Azha. So my dear students, आज आपको पता चल जाएगा कि Eid-ul-Azha क्यों मनाई जाती है, क्या स्पेशलिटी है कि हम Eid-ul-Azha का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं Muslims, and how we celebrate it. This will be discussed in today's lecture. So my dear students, let's quickly look at today's Islamic perspective. Allah has given you better than those feasts, the Eid al-Azha and Eid al-Fitr. So my dear students, Allah Ta'ala ने हमें 2 ईदें दी हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन हैं, और हम इनको बहुत ही जोशो खरोश से और बहुत खुशी से मनाते हैं. So my dear students, some pre-reading questions, quickly answer them. Name some festivals that you celebrate with your family and friends. I celebrate Eid al-Azha and Eid al-Fitr with my family and my friends. So my dear students, now quickly open page number 33 in your books. I hope everybody has opened page number 33. इस पेज पे हमने पहले से ही फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होते हैं पढ़ लिया था. किसी खास दिन में मजहब के हिसाब से जो है वो ये फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं. ईद उल फितर कैसे मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दैट. टुडे वी विल स्टडी अबाउट ईद उल अजहा. लेट्स क्विकली स्टार्ट रीडिंग. पुट योर फिंगर्स वेयर आई विल रीड. Muslims celebrate Eid-ul-Azha on 10th Zil-Hajj. This day is celebrated in the memory of the sacrifice made by the Prophet Ibrahim alayhi Islam when he offered the life of his son, Prophet Hazrat Ismail alayhi Islam. So my dear students, ईद उल अजहा कब मनाई जाती है? ये इस्लामी महीनों के हिसाब से 10th जिल हज को मनाई जाती है.
which is the last month of Islamic year. Islamic year है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, तो इनका लास्ट मंथ है जिलहज, और 10th जिलहज को जो है ईद उल अजहा सेलिब्रेट की जाती है बाय ऑल द मुस्लिम थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये हज से अगले दिन जो है ये मनाई जाती है, कुर्बानी दी जाती है जानवरों की। अब ये कुर्बानी क्यों दी जाती है जानवरों की, इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर है, नबी अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, और उन्होंने एक कुर्बानी दी थी अपने बेटे की, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, कि उनको ख्वाब में नजर आया था कि अल्लाह ताला ने उन्हें कहा है कि तुम अपने बेटे इस्माईल को मेरी राह में कुर्बान कर दो। तो उनको ये ख्वाब मुसलसल नजर आता रहा, तो उन्होंने हजरत इस्माईल से जाके बात की कि इस तरह से मुझे अल्लाह ताला का हुक्म आया है, तो क्या तुम तैयार हो। हजरत इस्माईल ने फौरन कहा कि आपको अल्लाह ताला के हुक्म की जो है वो तकमील करनी चाहिए, उसके ऊपर एक्ट अपॉन करना चाहिए। और वो उनको एक पहाड़ पर ले गए, वहां जाके उन्होंने उनकी कुर्बानी जब देने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी जगह एक दुम्बा उतार दिया। एंड टिल दैट डे ऑनवर्ड्स मुस्लिम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड सेलिब्रेट ईद उल अजहा के इतना बड़ा सेक्रीफाइस जो है वो हजरत इब्राहीम ने दिया और अल्लाह ताला ने उसको कबूल कर लिया, और उसके बाद से हम लोग जो है मुसलमान जो हैं वो ईद उल अजहा मनाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन नेक्स्ट पेज, टू फुलफिल द कमांड ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की हुक्म को पूरा करने के लिए, ऑन दिस डे मुस्लिम्स परफॉर्म ईद प्रेयर, सबसे पहले नमाज पढ़ी जाती है, एंड सेक्रीफाइस एनिमल्स इन द नेम ऑफ अल्लाह। तो जो गोट्स, काउज, शीप्स, बफलोज, कैमल्स, दे आर सेक्रीफाइस्ड, यानी कि इनकी कुर्बानी किसी एक की या इनसे ज्यादा की भी आप कुर्बानी जो है वो अल्लाह ताला की राह में जो है हम देते हैं ऑन ईद उल अजहा। द मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिलेटिव्स एंड द पुअर, और जो गोश्त होता है जानवर का उसके 3 हिस्से कर दिए जाते हैं, और उनमें से एक हिस्सा जो है वो गुरबा में तकसीम किया जाता है, एक जो हिस्सा है वो रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो ईद उल अजहा जो है वो मनाई जाती है हर साल 10 जिलहज को, which is the Islamic month, last Islamic month. So that is how Muslims celebrate Eid al-Azha. So my dear students, now is time for a very nice activity जिसको आप लोग बहुत enjoy करेंगे. So what you need to do is arrange Eid Milan party at school, ask students to wear their Eid dresses and share their feelings of Eid day. Discuss with students that people of other religions also celebrate their religious and cultural festivals, etc. Diwali, Easter, Baisakhi, जश्न नौरोज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके टीचर्स जो हैं वो आपको गाइड देंगे। दिस कैन बी ऑल्सो गिवन इन अ होमवर्क कि नेक्स्ट डे बच्चे अपने ईद के कपड़े जो है वो पहन कर आए एंड ब्रिंग देयर फेवरेट फूड, एंड देन दे कैन शेयर and celebrate Eid Milan party at their schools. And please focus on, teachers will focus on the importance of religious festivals in Islam and in other faiths also. So my dear students, now is the time for practice. For practice, you will open the writing practice in unit number 4, and today we will do question number 4. I hope everybody has opened the writing practice page. You need your notebook for this practice. So let's do the question. What is your favorite festival? What is special about it? So my dear students, whosoever is watching me, what is your favorite festival? Is it Eid-ul-Azha or it is Eid-ul-Fitr or both of them? And if you belong to other faith or other religions, तो तब आपका कौन सा फेवरेट फेस्टिवल है, यू हैव टू राइट अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू माइन. माई फेवरेट ईद फेस्टिवल इज ईद उल फितर because I get Eid on this Eid, and I eat savaiya. I really like sweet things, and I also decorate my hands with henna. I wear bangles, I wear new clothes, and that is why I love Eid, celebrating Eid al-Fitr. So this is how you will write about your favorite festival. So my dear students, now we will move forward towards your evaluation. For that, I will ask listening and speaking questions from the listening and speaking assessment given in unit number 4.
Quickly tell me, why do Muslims celebrate Eid-ul-Azha? जल्दी से बताएं क्यों ईद-उल-अज़हा सेलिब्रेट करते हैं? Because to remember the sacrifice given by Hazrat Ibrahim alayhi salam, every year Muslims celebrate Eid-ul-Azha to remember that sacrifice. How do Muslims celebrate Eid-ul-Azha? They sacrifice animals like goats, buffaloes, and camels. Which of Eid is celebrated on 1st of Shawwal? Very good. Eid-ul-Fitr. Which of the Eid is celebrated on 10th Zil-Hajj? That is Badi Eid, Eid-ul-Azha. Very nice. Now, my dear students, we will move forward towards your homework. For homework, you need to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. You will write down your name and your class at the top first. So, my dear students, it's about Eid-ul-Azha. Fill in the blanks. A word bank is given to you. Number 1, Muslims celebrate Eid-ul-Azha on dash 10th Zil-Hajj. Very good. The day is celebrated in the memory of the sacrifice made by the Prophet Ibrahim alayhi salam. Very good. He offered the life of his son, Prophet Ismail alayhi salam. Very good. The dash is distributed among the relatives and the poor. The meat. On dash, people sacrifice animals and distribute its meat on Eid-ul-Azha. Very good. This is how you will finish the worksheet. Next question is, how do you celebrate Eid-ul-Azha? Write a few sentences using vocabulary. So the vocabulary is given here. Sacrifice, prayer, new clothes, meat. So using these words, you have to make a few sentences on Eid-ul-Azha. Like, we get up early in the morning, we get ready, wear new clothes, and then we offer our Eid prayers. Then we sacrifice the animals and distribute its meat among the relatives and the poor. And my mother makes very nice biryani on Eid-ul-Azha. So this is how you can write a few lines about Eid-ul-Azha using these words. So my dear students, you will complete the worksheet in the homework. And then today what we have learned, let's quickly revise it. Festivals connect us with our families and background. Religious festivals promote peace, love, and harmony. Muslims celebrate Eid-ul-Azha on 10th Zil-Hajj. So, festivals जो हैं ये प्यार और मोहब्बत बढ़ाते हैं, हम आपस में मिलते हैं, ये अमन का बाइस बनते हैं. इसके अलावा मुसलमान जो हैं वो हर साल 10th Zil-Hajj को, which is the last month of Islamic months, उस दिन जो है वो Eid-ul-Azha celebrate करते हैं after performing Hajj. So my dear students, I hope you have learned a lot about Muslim festival Eid-ul-Azha. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.